Good morning, welcome back to the channel Awesome Learning. And the last video for the chapter Respiration in Plants, we will be talking about respiratory balance sheet. We will also be talking about respiratory quotient, amphibolic pathway. So let's see all these topics in this video. So to begin with, children, the respiratory balance sheet. Now, net gain of ATP from each glucose molecule is calculated based on the following assumptions. All the steps of glycolysis, all the steps of TCA cycle, all the steps of ETS, they occur sequentially, that is in sequence and orderly, right? So the NADH synthesized in glycolysis, if you remember, NADH was synthesized in glycolysis, is transferred into the mitochondria and it undergoes oxidative phosphorylation. We have done this all. Immediate intermediates in the pathway are not used to synthesize other compounds. Okay, the final product is always used. Intermediates are not used. Only glucose is being respired here. That means breaking down किसकी हो रही है? Only glucose की. Other alternative substrates are not entered in the pathway at any stage. यानी कि कोई और substrate add हो जाए या कहीं बीच में pathway के बीच में कोई और substrate add हो जाए, ऐसा नहीं है. We are using only glucose here. So such assumptions are not valid. Why? बिकॉज अगर हम ये जितनी भी चीज़ें हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज हम वी स्टार्टेड फ्रॉम ग्लूकोज दैट इज वन सबस्ट्रेट जो ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट हुआ एंड वी आर टेकिंग इट वी आर कैरिंग फॉरवर्ड इट फ्रॉम वन साइकिल टू द अदर एंड द थर्ड साइकिल ईटीएस तक ले आए हम उसको और हम ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट्स जो हैं वो पाथवे में यूज़ नहीं होते एंड नो अदर प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट इज बीइंग यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन हियर. तो ऐसी assumptions जो हैं ये वैलिड नहीं है. बिकॉज अब क्यों वैलिड नहीं है? रीजन है, द फर्स्ट रीजन इज ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर. ऐसा नहीं है बिकॉज ग्लाइकोलिसिस हो गया. सपोज वन थिंग इज देयर कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस में NADH बन गया. नाउ दिस NADH मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट साइकिल. तो क्या ग्लाइकोलिसिस वाला जो पाथवे है वो रुक गया? ऐसा तो नहीं है ना. NADH तो न्यू साइकिल में एंटर कर गया बट ग्लाइकोलिसिस का पाथवे तो फिर से स्टार्ट हुआ, उसने फिर से अपना काम, तो यानी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं सब. Substrates enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary. So substrate कभी भी enter हो जाते हैं and जैसे भी जरूरत हो they can be withdrawn, they can be removed. So ATP is utilized as and when needed. क्योंकि अब कभी भी सबस्ट्रेट ऐड हो रहा है और कभी भी सबस्ट्रेट जो है रिमूव हो रहा है या विड्रॉ हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर एटीपी जरूरत है तो एटीपी यूटिलाइज हो रही है. Enzymatic rates are controlled by multiple means, of course, right? So such calculations are used to appreciate the efficiency of living system in extraction and storing energy. So now let's see here. If we see here on this chart, ATP theoretical yield अगर हम देखें, theoretically अगर हम देखें ATP को, so this is glycolysis and here ATP is used and ATP is also being produced, right? तो glycolysis का product क्या है? देखो 2 ATPs. What we get from glycolysis is 2 ATPs and here 2 NADH. That means 4 ATPs which are again मतलब oxidized. जब ये oxidized हो जाएंगे then we get 4 ATPs and here 2 NADH. So 6 ATPs we are getting. So next Krebs cycle. So you see from Krebs cycle 2 ATPs, 6 NADH, so 18 ATPs and 2 FADH2 when they get oxidative phosphorylation हो जाएगा तो 4 ATPs. तो पूरा हिसाब किताब या नेट अगर हम देखें so we are getting 36 ATPs. Now let me show you here. Glycolysis में 2 ATP directly produce हो रहे हैं और 6 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करके प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफ 2 NADH. Here oxidative decarboxylation में 2 NADH are producing 6 ATPs
TCA साइकिल में 6 NADH है तो 18 ATPs आर प्रोड्यूस, 2 FADH है तो 4 ATP एंड 2 GTP है तो 2 ATP. सो अल्टीमेटली टोटल यू आर गेटिंग 38 ATP. ओके, यहाँ पर हमने 2 GTP ऐड नहीं किया, so that is why they have written 36, but if we add this also then we are getting 38 ATP. So 2 ATP molecules are spent for transporting 2 NADH molecules formed during glycolysis to the mitochondria. तो ये 2 ATP खर्च हुए. हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन था 38 ATPs, लेकिन 2 ATPs खर्च हुए थे ट्रांसपोर्टेशन में. तो इसलिए अब हमने 38 में से 2 माइनस करें तो अल्टीमेटली नेट गेन जो है हमारा वो है 36 ATPs, राइट? क्योंकि ये 2 ATPs जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए. जो पूरा बैलेंस शीट हमने तैयार की है तो उसमें वी हैव टू शो एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट इज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. नेक्स्ट वी कम टू एरोबिक रेस्पिरेशन कंपैरिजन. अगर करते हैं हम लोग फर्मेंटेशन एरोबिक में, सो दिस इज व्हाट इज शोन हियर. पार्शियल ब्रेकडाउन है ऑफ कोर्स फर्मेंटेशन, एरोबिक इज कंप्लीट ब्रेकडाउन. नेट गेन 2 ATP है, यहाँ नेट गेन 36 है. NADH is oxidized to the NAD plus rather very slowly. It is very vigorous here. Right, so next is amphibolic pathway. Now what is amphibolic pathway? Glucose is favored substrate. मतलब बहुत सारे substrates हैं, but हमारा जो favorite substrate है that is glucose for respiration. So all the carbohydrates are first converted into glucose. क्योंकि फेवरेट, क्योंकि सबसे इजीएस्ट है ग्लूकोज जो है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट आए, सबसे पहले उसे आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करो और फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करो फॉर रेस्पिरेशन. सो अदर सबस्ट्रेट्स आर आल्सो रेस्पायर्ड. बाकी सारे सबस्ट्रेट्स भी रेस्पायर होंगे, जितने और सबस्ट्रेट है ग्लूकोज के अलावा वो भी रिस्पायर होंगे, बट एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा उनके साथ कि पहले उनको हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में और फिर हम बाकी का सारा प्रोसीजर करेंगे. तो फैट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड टू एसिटिल कोएंजाइम एंड एंटर द पाथवे. तो फैट्स अगर हैं, देखो तो एंटर तो करना है ना कहीं ना कहीं. तो अगर फैट्स हैं तो फैट्स जो हैं दे विल गेट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट, एंड देन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम एंड ये देखो एंटर कर गया, साइकिल में एंटर कर गया. एसिटिल को एंजाइम ए में आया एंड उसके बाद साइकिल में एंटर कर गया. तो फैट्स भी उसी रास्ते, चलना सबने उसी रास्ते है, लेकिन हम उनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद. देन PGAL, glycerol is converted into PGAL and it enters the pathway. ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल पहले होगा, फिर PGL में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, फिर उसके बाद इट एंटर्स द पाथवे. प्रोटीन्स देखो, दे आर अगेन डिग्रेडेड. देखो प्रोटीन्स अगर हैं तो दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स बिकॉज दे आर द सिंपलर फॉर्म्स एंड ईच अमीनो एसिड जो है इट विल एंटर द पाथवे एट सम स्टेज इन द कर्ब साइकिल. पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में या एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा. अगर यहाँ कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम में तो यहाँ से एंटर कर जाएगा. अगर पायरुविक में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से एंटर कर जाएगा साइकिल में. अल्टीमेटली इट रीच टू द साइकिल. Respiratory pathway is generally considered as a catabolic pathway, okay, but it involves both anabolism, that is synthesis, and catabolism, that is breakdown. है तो वैसे कैटाबॉलिक क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो है तो ये कैटाबॉलिक पाथवे. लेकिन यहाँ पर इस पूरे प्रोसीजर को कन्वर्ट कर जब होने में बीच बीच में एनाबॉलिज्म यानी small ones are clubbed together to form complex molecule. एनाबॉलिज्म भी हो रहा है एंड कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे. ठीक है. So fatty acids are broke down into acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway, but when the organism needs to synthesize fatty acid तो यही acetyl coenzyme ये withdraw कर दिए जाते हैं
फ्रॉम द रेस्पिरेटरी। तो देखो यहाँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट हुई अगर फैटी एसिड वापस चाहिए तो वापस से विड्रॉ करके उसको एनाबॉलिज्म कर देंगे। ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, respiratory intermediates are involved, right? So that is why we call it as amphibolic pathway. Next here topic is respiratory questions or RQ. As you see here, respiratory question RQ is the ratio of volume of CO2 evolved upon volume of oxygen consumed. That is respiratory question. So RQ depends upon the type of respiratory substrate. आपका substrate glucose है, carbohydrate है, आपका substrate protein है, आपका substrate fatty acids है. तो RQ, remember, of carbohydrates is always 1. You have to learn this. RQ of for carbohydrates is always 1 because equal amounts of oxygen and carbon dioxide are evolved and consumed respectively. देखो है ना? So 6 carbon dioxide and 6 oxygen. So that is why your RQ for carbohydrates is always 1. So RQ for carbohydrates is 1, but RQ for fats is less than 1, more than 1, and for proteins is equal to 0.9. Okay. So this is see, RQ of fats, calculation of fatty acids. You see, this is RQ for fats, 102 carbon dioxide upon 145 oxygen. So it is less than 1, that is almost 0.7. So almost equal to 0. Less than 1. Yeah, so RQ for fats is always less than 1, and RQ for proteins is almost 0.9. In living organisms, respiratory substances are often more than 1. Pure proteins or fats are never used as respiratory substrate. Remember this line, important. Okay, so RQ for carbohydrates is always 1. Baki dono ke RQs are lesser. Okay, less than 1. So this is all about respiration in plants.